Friends, how are you? How's your life going on? Today we are going to talk about models. Okay, in previous lecture we discussed the types of models. Okay, and we know that models are auxiliary verbs. Okay, today we'll use can, could, should, may. Okay, so first of all, the use of can and could. Okay, the use of कैन एंड कुड ओके कैन और कुड किसी काम को करने की शक्ति सामर्थ्य या अधिकार को प्रकट करने के लिए यूज करते हैं कैन या कुड किसी काम को करने की शक्ति सामर्थ्य तथा अधिकार को प्रकट करते हैं ओके कुड कैन का पास्ट टेंस होता है ओके so can represents capacity or capability okay if I write here I can jump over the wall I can jump over the wall मैं ये दीवार फांद सकता हूँ okay so I can jump over the wall okay Mohan cannot lift this box alone okay capacity capability okay मोहन अकेला ये संदूक नहीं उठा सकता है ओके मोहन कैन नॉट लिफ्ट दिस बॉक्स अलोन ओके शी could not get success this year she could not get success this year okay वह इस वर्ष पास नहीं हो सकी या वह इस वर्ष सफलता प्राप्त नहीं कर सकी okay no boy could solve this sum okay no boy could solve this sum okay I mean कोई लड़का या कोई भी लड़का ये प्रश्न सॉल्व नहीं कर सका okay so we used here can could and could I can jump over the wall okay Mohan cannot lift this box alone she could not get success this year no boy could solve this sum okay so it represents capacity capability अधिकार okay right could ये can का past tense होता है okay right next it was can and could okay now we will discuss may or might may and might okay may might आज्ञा प्रार्थना इच्छा संभावना और उद्देश्य एम को प्रकट करते हैं मे का पास्ट टेंस है might ओके may I come in permission okay permission may I come in okay you may take this book okay you may take this book okay
May she have good health. Okay. May she have good health. Okay. परमात्मा करे, भगवान करे उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे, भगवान करे, परमात्मा करे उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे. ओके. It may rain tonight. It may rain tonight. Okay. संभवतः आज रात को बारिश हो सकती है. Right. She worked hard so that she might pass. Okay. She worked hard so that she might pass. Okay. उसने परिश्रम किया ताकि वे पास हो जाए. Okay. So, may and might, permission, प्रार्थना, इच्छा, ओके, संभावना, ओके, इसके लिए may और might यूज किया जाता है. May I come in? You may take this book. May she have good health. Okay. It may rain. Okay. Possibility. Okay. संभावना. She worked so that she might pass. Okay. This is may or might. Okay. Next, should, must, ought to. Okay. Should, must, ought to. Okay, right. Should, ड्यूटी, शिक्षा और अपना कल्पना को प्रकट करता है. लेस्ट के आगे भी शुड का यूज किया जाता है. ought to अपनी मॉरल ड्यूटी को रिप्रेजेंट करता है. मस्ट सच्चाई, संकल्प, ड्यूटी, ओके, इसको रिप्रेजेंट करता है. ओके. You should obey the rules of the traffic. Okay. You should obey the rules of the traffic. तुम्हें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए. Okay. Should, चाहिए. Okay. You should obey the rules of the traffic. Should you go to Mumbai to see my brother? यदि आप मुंबई जाओ, ओके, तो मेरे ब्रदर से जरूर मिल लेना. ओके. वर्क हार्ड lest you should fail. मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो कि फेल हो जाओ. राइट. You ought to serve your parents. You ought to serve your parents. Okay. आपको अपने पेरेंट्स की सेवा करनी चाहिए. Okay.
I must fight for my rights. I must fight for my rights. मैं अपने अधिकारों के लिए अवश्य लड़ूंगा. Okay? मैं अपने अधिकारों के लिए अवश्य लड़ूंगा. I must fight for my rights. RIGHTS. Okay. So friends, we have used here should. Okay, you should obey the rules of traffic. Should you go to Mumbai? Okay, यदि आप मुंबई जाओ तो मेरे घर से जरूर मिल लेना. Work hard, less you should can. Okay. It's a combination of less or should. Okay. मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो कि fail हो जाओ. You ought to serve. Ought to. It represents moral duty. It represents moral duty. नैतिक कर्तव्य. Okay. Next, I must fight for my rights. Okay, we have used here must. Okay. So we have discussed should, must, ought to. Next, we will discuss would. Okay. Would सेंटेंस में इच्छा, आदत, प्रार्थना और ये विल का पास्ट टेंस भी होता है. Okay. Would that I were rich. काश मैं अमीर होता. काश मैं अमीर होता. Okay. Would that I were a bird. काश मैं पक्षी होता. Okay. Indu said that she would see Taj Mahal. Okay. Indu said that she would see Taj Mahal. Okay. I would like to play cricket. I would like to play cricket. Okay. So, would that, okay, कल्पना और काश में अमीर होता, काश में पक्षी होता. Indu said that she would see the Taj Mahal. Okay. I would like to play cricket. मैं क्रिकेट खेलना चाहूँगा. Okay. और ये will का क्या है? Past tense होता है. Would. Okay. Next. Dare and need. Okay. Dare and need. He dare not meet the principal. उसमें प्रिंसिपल से मिलने की हिम्मत नहीं है. He dare not meet the principal. You need not worry about it. You need not worry about it. Okay.
तुम्हें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए. Okay. Need I write this letter? Okay. क्या इस पत्र को लिखने की आवश्यकता है? क्या मुझे इस पत्र को लिखने की आवश्यकता है? So friends, this is dare or need. Okay, he dare not meet the principal. You need not worry about it. Need I write this letter? Okay. So we have discussed today can, could, may, might, should, must, ought to, would, dare and need. Okay. So that's all for today. I hope you must have got knowledge. Okay, you would enjoy this video. Okay, thank you very much.